पुणी थरे अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नखरामी निजर ट्रुथ सोशल मीडिया रे पोस्ट कले नुआ मैप अमेरिकार नुआ मानचित्र रे हरमुज प्रणाली स्थान पाइथिबा देखा जाइछि। गत अगस्ट 18 तारिख रे एही धरणर एक मानचित्र पोस्ट करथिले ट्रंप जो प्रणाली पाई सारा विश्व रे अस्थिरता जारी रहिछि ताहाकु पुणी थरे निजर बोली दोहराइछंती ट्रंप। गत अगस्ट 14 रे ट्रंप कहिथिले खूब शीघ्र हरमुज को अमेरिकार एक अंश भाव घोषणा करिवे। ट्रंप को एही घोषणा को समालोचना करछंती ईरान सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरी मोहसिन रेजाई। 7000 माइल दूर रे थिबा हरमुज को अमेरिका निजर बोली घोषणा करिबा असोभनीय बोली से कहिछंती। सेबडे खूब शीघ्र ईरान विरोध रे अमेरिका कठोर अर्थनैतिक कटकणा जारी करिबो बोली सूचना दिछंती अमेरिका ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट। एही प्रस्तावित कटकणा को समालोचना करछंती ईरान वैदेशिक मंत्रालय मुखपात्र इस्माइल बाघी। Well, I'm afraid the situation perhaps might escalate because what we have to recognize is that President Trump has lost the war and he may not resume the war for reasons well known: depleted stock, dwindling public support, and the looming midterms. See, President Trump is used to hyperbole. He has often in this war declared complete victory, declared Hormuz is open, and that Strait of Hormuz is American territory. These are statements, I think, of bluff and bluster, psychological, let's say, warfare even, because seems to be no reality to this. Mr. Trump and Iran are both head on head with regard to freedom of navigation through Strait of Hormuz. Iran regards the situation as having evolved since February 28 when US and Israel attacked Iran, and it regards now that the freedom of navigation through the Strait of Hormuz as enshrined in the WMO's Law of the Sea Convention is no longer valid. आलोचना करबा पई आम सब ऑनलाइन रे अछंती वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद मिश्र सर स्वागत करूछि आपनकु आलोचना को। जे भली भाबरे ट्रम्प कर ए जो नखरामी अमेरिकार नुआ मानचित्र रे हरमुज स्थान पाइबा एहा परवर्ती समय रे अमेरिका एवं ईरान मध्य रे कूटनैतिक संकट को केते पढाउछि। कूटनैतिक संकट जो लेवल ले चली जे ताकू आगु को बढ़ाइबार कोनो स्कोप नै। इट इज ऑलरेडी एट एन एस्केलेटेड लेवल। अब ए जो Hormuz is part of US territory. There is no so he can bring in even moon as United States territory. He has done that with Greenland. So this is a lunacy at its height. International community is watching a lunatic. When a lunatic heads a powerful state, entire world community is witnessing a unnecessary war that has been waged, and after admittedly losing the war, the United States, particularly Donald Trump, is trying to do this, one-upmanship, basically keeping the midterm election in mind. How military objective fulfill however nahi, only political objective we can extract out of it is some kind of victory in the midterm election in November. Image macho image and USA first, and USA is great. Whatever USA does is the best. Image he wants to go to the midterm election, and entire globe, entire international community he doesn't hesitate to put in trouble. Strait of Hormuz को नहीं जो नाटक करूचंती से जो अस्थिरता तैयारी करूचंती the entire world economy is affected, entire world community is affected, but nobody can do anything because United States is that country which controls 36% of international economy. So
world is निहाती भाव सर तेबे जो भली भाव में ट्रम्प यही पदक्षेप को ईरान मध्य दृढ़ समालोचना करिछि परवर्ती समय रे एही विवाद आगो को केउ रूप नहीं पारे नहीं एटा तो एटार कोनोसी वैधता नहीं तेणु इट हैज टू बी कंसीडर एज नॉल एंड वॉइड एंड ओनली थिंग इट ऐड गोटे जिनस ये ऐड करूछि कि डोनाल्ड ट्रम्प को लेवल ले वर्तमान चिंता करूछंती कारण वंस ही हैज डिक्लेयर्ड हॉर्मुज एज द टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स the United States get sweeping powers to exercise in that particular territory. So that means वर्तमान जो amount of power United States से deploy करूतला तार quantity it might increase and सेथिपई तांकर technical requirement जो deployment outside deployment पे गोटे congressional approval दरकार that will not be required. But these are only technical aspects. The objective is very clear. ऑब्जेक्टिव होची टू कंटिन्यू फाइटिंग विथ ईरान जोटा कि यूनाइटेड स्टेट्स रो कौन सी इंटरेस्ट को सर्व करबनी एक्सेप्ट सर्विंग इजराइल इंटरेस्ट दैट बेंजामिन नेतन्याहूज इंटरेस्ट जोटा हम बारंबार कहिछि डोनाल्ड ट्रम्प इज नॉट फाइटिंग ए वार फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ही इज फाइटिंग ए वार एज अ हायर्ड गून ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू तेणु स्टेज पे वार फाइटिंग एबिलिटी टाकू कंक्लूड पे स्टेप निया जाइछि कारण हम जानिथिबे लास्ट मंथ there was a vote against Donald Trump. He cannot deploy USA military force because the 60-day deadline had passed. तेणु वर्तमान जदि Strait of Hormuz territory of America declare कर दिया जाए, no approval is needed. So these are political, technical political issues and legal issues that Donald Trump is trying to negotiate only to retain the right to fight with Iran. जोटा कि होची इजरायली ऑब्जेक्टिव निहाती भाव सर बहुत बहुत धन्यवाद।